Good evening to everyone. I hope my voice is audible to everyone. Okay, thank you. So we'll just wait for 2 to 3 more minutes and we'll start. How was the test, everyone, guys? आप सबके लिए टेस्ट कैसा था? Yes, so welcome everyone to Synapse Career Institute. Here we provide you with the free online classes for CSI, NET, GATE, TVT, JRF, ICMR for life sciences. And today is my lecture for cell biology, and first we will be discussing some questions that were asked in the test, right? So I just wanted to know how was your test? कैसा गया आपका overall marks and stuff? Because this time I have not done the checking, sorry. So many of the students have given, this time the test was, kind of, मतलब kind of predictable kind of stuff जिसके अंदर मैं देखा हूँ कि major students ने जो करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट किया है. So it's a kind of good thing, right? So let's move on. So I have this second lecture today. I'm sorry, sixth lecture today for cell uh, biology that I'm dealing with. I'm dealing with membrane structure and transport. And today we will be discussing about test discussion, जो कि हम करेंगे थोड़े बहुत questions के बारे में we'll discuss. And membrane transport के अंदर हमने जहाँ पे left किया था हम उसके आगे से उसको continue करेंगे, right? So before moving on further, Shanu has said something. Yes, Chanu, we'll see. Let's see what happens. Yeah. So I guess you only probably would be giving the answers for this kind of test because it was a kind of a, see, the subject itself, cell biology, it's a kind of a theoretical kind of stuff जिसके अंदर आपको इतना ज़्यादा apply करने का नहीं होता है. You have to apply, but yeah, there is not much of the information that you need to remember kind of stuff. थोड़ा सेल बायोलॉजी के अंदर स्टफ ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं एज कम्पेयर टू जैसे आपका जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जिनके अंदर आपको थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड काइंड ऑफ स्टफ को थोड़ा देखना पड़ता है. इसमें भी है बट काइंड देयर आर काइंड ऑफ लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, right? So I'll be discussing some few questions. So this is the first question that came in the test.
So anyone please tell me the answer. Please tell the answer as well as state the reason for that answer, right? So the question says choose the correct order of molecules according to their ability to diffuse the lipid bilayer. And the molecules are हमारे पास CO2 है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास ग्लूकोज है एंड हमारे पास RNA है, right? So on the basis of this you have to select the numbering, right? कि कौन सबसे पहले मतलब in the correct order of molecule which has high tendency to cross the lipid bilayer and which has a very low tendency to cross the lipid bilayer, right? So as I have already told you कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट कैन बी डिफ्यूज्ड इजीली सबसे पहली चीज तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इट कैन इजीली पास ऑन थ्रू द मेम्ब्रेन, राइट? नॉन पोलर मॉलिक्यूल एज वेल एज अ स्मॉल मॉलिक्यूल also exist in gaseous state, right? So it can easily exist in gaseous states. So the first thing, the first number जो हम सबसे जो वो पास ऑन करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड करेगा. सेकेंड इज वाटर, राइट? एज करेक्टली सेट क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल है, हालांकि पोलर है बट सिंस इट्स अ स्मॉल मॉलिक्यूल इट कैन काइंड ऑफ क्रॉस द मेम्ब्रेन kind of quite easily, right? Because it's a small molecule. Then glucose and RNA both are being kind of a very big molecules, big structures, and also they are kind of not non-polar structures. So मतलब pass on करना उनको थोड़ा मुश्किल kind of होगा, right? Because they are kind of big structures. I guess many of them have rightly answered this question. Almost everyone, I guess. So third and fourth. So it's the option number A is correct for this particular. राइट आई गेस क्योंकि ये क्लास में मैंने बहुत बार बताया था कि कौन पहले जाएगा, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक स्टफ. तो आई गेस किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, राइट? यस, चानू हैज रिप्लाइड, कौस्तुभ हैज रिप्लाइड. एक्सीलेंट. या सो आई होप it's kind of clear to everyone. Let's move to the next question. Right, so the next one is this one. Which of the following is incorrect about facilitated diffusion? So again a very simple question, I guess. Right, we know that facilitated diffusion में क्या क्या चीजें होती हैं. I just given a glimpse, right? Not the entire facilitated diffusion के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं वैसे तो. कैरियर प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स जो चल रहा है वो सब facilitated diffusion का भी पार्ट है, right? So the rate is higher than simple diffusion. It's right, right? The rate of the transport is quite higher than simple diffusion. It's correct or right? So we have this. Then the partition coefficient is irrelevant for it. No, because since in partition coefficient माने log p value, and what does log p value indicate? Log p value indicates the hydrophobicity of a certain molecule, right? पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या बताता है? हाइड्रोफोबिसिटी बताता है किसी मॉलिक्यूल की. एंड जो हाइड्रोफोबिसिटी होगी मॉलिक्यूल की वो डिसाइड करेगी कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को कैरियर प्रोटीन चाहिए, चैनल प्रोटीन चाहिए, या वो नॉर्मली डिफ्यूज कर सकता है. तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टफ जो कि हम सिंपल डिफ्यूजन में कंसिडर करते हैं, ना कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, राइट? सो इट इज इररिलेवेंट फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिकॉज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर हमें क्या चाहिए? वी नीड चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन. अगर पार्टीशन कोएफिशिएंट की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट यूजिंग अ चैनल और समथिंग, इट इज यूजिंग अ ट्रांसपोर्टर टू move across the membrane, right? So it is a kind of irrelevant stuff for facilitated diffusion, but it is a major factor to be considered for a simple diffusion process, right? Then it can be saturated at high concentration of the solute. It's absolutely right because सारे के सारे channel proteins जो हैं वो used up हो जाएंगे, right? ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर सोल्यूट को, तो उसके बाद जितनी भी सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो वो नहीं बढ़ेगी, राइट? सो इट शोज अ काइंड ऑफ this kind of curve, sorry, straight line. It kind of shows a straight line curve which gives the value of saturation, right? This gives the saturation kind of stuff. So this is also is correct, and it works against the concentration gradient. See, as the name suggests, diffusion, that means it is not working against the concentration gradient. However, it is working towards the concentration gradient, that is from high to low. So this is the correct statement, the correct answer, sorry. This is the correct answer
and the wrong statement is this one. The incorrect statement is the fourth one, right? I hope it's kind of clear to everyone. Yes, yes. So can anyone provide me with the answer for this particular question? Can you please provide me the answer to this particular question? So we have different amino acids, right? We have different amino acids. So can you tell me the kind of a rough kind of estimate of the answer that you and the reason that you have given for this particular question? कि आपने इसके अंदर क्या सिलेक्ट किया था? The gel to liquid crystalline phase transition temperature in phosphatidylcholine lipids composed of, so these are diol, dipalmitoyl, diesterol, palmitoyl diol fatty acids in the increasing order would be gel to liquid crystalline phase transition. That means it is moving from gel to liquid, right? That means from rigid structure to a fluid structure. That means membrane की fluidity आपको बतानी है in the increasing order. The gel to liquid transition phase transition temperature in phosphatidylcholine composed of diol, palmitoyl, diesterol and palmitoyl EOL fatty acids in the increasing order would be, क्या होगा कोई बता सकता है? Anyone please can reply in the chat box the answer for this question. What you have selected and what on the basis of what thing that you have selected that particular option that you are thinking. Passed. Chanu said she has passed. Anyone? The answer for this question is the second one, right? But can anyone tell me the option? The answer for this is this. Can anyone tell me with the now from the options I have provided with the answer? From the option, can anyone tell me कि जो liquid gel to crystalline transition होना है, जो rigid से fluidity होनी है, that means the membrane is becoming fluid, right? The membrane is becoming fluid, and it is saying the temperature increasing order में temperature बताना है कि किसका temperature ज़्यादा होगा एज अ जेल टू फ्लूइड उसको मूव कराने के लिए. दैट मीन्स कौन सा मॉलिक्यूल जो है उसको ज्यादा टाइम लगेगा फ्लूइड कराने के लिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसका टेम्परेचर ज्यादा. दैट मीन्स विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स हैज अ हाईएस्ट काइंड ऑफ यू कैन से कॉम्पैक्शन, राइट? जो ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा उसी को ही हमको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, इंक्रीज टेम्परेचर लगेगा उसको मेल्ट कराने में, राइट? जेल से लिक्विड बनाने में, राइट? So on the basis of that, we can say the gel to liquid crystalline phase transition temperature in the increasing order. That means सबसे ज्यादा किसको वो लगेगा टेम्परेचर लगेगा, it will be disterol phosphatidylcholine. Then the second is DPPC, that is dipalmitoyl phosphatidylcholine. The third one is Arun. The third one is, I'm sorry, just a second, guys. So it is gel to liquid transition. I'm sorry, yes, sorry. Yeah. So it is gel to liquid. So the first one is सबसे ज़्यादा किसको लगेगा? DSPC, that is disterol phosphatidylcholine. Then we have DPPC, that is DPPC, that is
dipalmitoyl phosphatidylcholine. Then we have POPC, that is palmitoyl oleoyl phosphatidylcholine, and DOPC, that is dioyl dioyl phosphatidylcholine. राइट सो दिस इज अ काइंड ऑफ, सो इसके अंदर ये है कि आपको थोड़ा काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बेसिस पे थोड़ा आपको पता होना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड इट आउट कि किसको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा. राइट, ज्यादा टेम्परेचर कब लगेगा? जब उसके अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो ज्यादा होगा. राइट, बिकॉज अनसैचुरेशन फैटी एसिड, अनसैचुरेशन जो है वो फ्लूइडिटी की तरफ ज्यादा इंटेंड करता है, इंक्रीज करता है. राइट, मैंने बताया था कि सपोज इफ दिस इज, यहाँ पे हमारा फ्लूइडिटी है, फ्लूइड स्टेट, एंड यहाँ पे हमारा जेल स्टेट है. राइट, तो हमारा अनसैचुरेशन अगर फैटी एसिड होगा तो वो फ्लूइड होने के उसके चांसेस ज्यादा है. अगर कोई चीज सैचुरेटेड है तो वो जेल स्टेट में ज्यादा पाई जाएगी. तो आपको इसमें क्या देखना था, यू हैव टू सर्च फॉर कि किसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है. राइट, तो आप उसके बेसिस पे फ्लूइडिटी बता सकते हो उस मेम्ब्रेन की. अब आपको बताना है कि ये जेल से फ्लूइड की तरफ मूव कर रही है. राइट, दे आर मूविंग फ्रॉम जेल टू फ्लूइड. दैट मीन्स द फेज टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर में. दैट मीन्स अगर टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, दैट मीन्स उसकी सैचुरेशन या उसका जेलनेस, जो जेल वाली रिजिडिटी स्टेट है, वो बहुत ही ज्यादा है. दैट मीन्स तभी उसका फेज टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है. तभी उसका फेज टेम्परेचर क्या है, वो बहुत ही ज्यादा है. Right, so on the basis of these two things, these two factors, degree of saturation, unsaturation, and gelness, and a kind of uh, information about the dioil and the palmitoyl and stuff, इनके थोड़े थोड़े पॉइंट्स के बेसिस पे आप ये बताओगे कि इनके अंदर क्या चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी. जो ज्यादा सबसे पहले जो होगा, दैट मीन्स इट हैज वेरी हाई अमाउंट ऑफ फेज टेम्परेचर. फेज टेम्परेचर उसका क्या है, बहुत ज्यादा. दैट मीन्स इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर टू चेंज द स्टेट फ्रॉम जेल टू फ्लूइड. राइट, एंड सिंस इसको सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्यों लग रहा है, मे बी बिकॉज इट कैन बी सैचुरेटेड कंपाउंड, और मे बी अदर रीजंस जो हमने कोलेस्ट्रॉल एंड स्टफ उनके बारे में पढ़ा था. राइट, तो अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट करना है तो आप सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन को ही काउंट करते हो. राइट, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ यू शुड नो अबाउट कौन कौन सी लिपिड्स हैं, क्या क्या होती हैं, जो कि आपको यासिर सर ने आई गेस कवर कराई हैं. राइट, कि कौन कितने टाइप्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड स्टफ. राइट, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन स्ट्रक्चर बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. Okay. Next is lipid rafts are rich in both sphingosine, sphingolipids and cholesterol. Right? Cholesterol plays a central role in raft formation. Cholesterol raft formation में भी काम करता है. And since these rafts are not formed in its absence, क्योंकि cholesterol और sphingolipids की absence में ये काम नहीं करेंगे. Which statement correctly explains the essential role of cholesterol for lipid raft formation? It's as simple as that. I've given the entire line जो कि मैंने क्लास में बोली भी थी, ये लाइन एग्जैक्ट लाइन बोली थी कि cholesterol decreases the mobility of the sphingolipids. No, it doesn't decrease the mobility of sphingolipids. However, वो fluidity को थोड़ा बहुत maintain करने में help करता है. ना extreme में जाने देता है, ना decrease में जाने देता है. It's kind of a maintaining nature cholesterol का. Right, so this statement is kind of not correct. Then we have large head group of sphingolipids repel each other in presence of cholesterol. They do, but it depends on the amount of cholesterol which is present. So it is not correctly describing the statement of lipid raft. Right, so this is also kind of wrong. Then we have cholesterol interacts with fatty acid tails in the membrane. No, it doesn't interact with the fatty acid tail. It interacts with both the polar group as well as the non-polar group by making the interactions. Right, by making the interaction वो दोनों के साथ करता है ताकि membrane की fluidity बनी रहे. Right, so the correct answer is it is the planar cholesterol molecule which is filling the void. दो हेड ग्रुप के बीच के अंदर एक जगह खाली होती है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल फिट हो जाता है. इट गेट्स फिट इनसाइड दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट the reasons जो हमारा होता है वो चलता है. Right, so the correct answer for this is the planar cholesterol molecules are postulated
to fill the voids, right? They fill the void gap जो है, right? दो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, right? ये दो फैटी एसिड मैंने आपको बताए थे, ये दो फैटी एसिड, और ये डायग्राम भी मैंने बताया था, एंड यहाँ पे आपका जो है वो रिंग स्ट्रक्चर का कोलेस्ट्रॉल है, काइंड ऑफ दिस स्टफ, राइट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टफ जो कि आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये दो हाइड्रोफोबिक लिपिड्स के अंदर, जो दो लिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको ये ऐसे कोलेस्ट्रॉल जो है ये ऐसे मिलेगा. So these are the cholesterol, these are the lipids, right? Yes. So it is filling the void that form underneath the large head group of sphingolipids. जो sphingolipids होती हैं उनके जो दो head groups हैं उनके बीच के अंदर it is kind of a forming a filling kind of thing, जो कि void खाली होगा वहां पे जाके इसको बनाते हैं, right? Yes. So I hope it's kind of clear. It was a simple thing, not that thing. So it is the option number D which is correct. Right, so it is a planar cholesterol molecule that is being filling the void of the large head group, right? Yes. So again the next question is, which of the following statement regarding the membrane transport is false, right? Which of the following regarding membrane transport is false? So polar and charged solute will cross the cell membrane effectively without the specific protein carrier. It's a kind of a opposite thing जो कि बिल्कुल सुनिए, because polar molecules and charged molecule will need an assistance, right? So हमने बताया था कि polar molecules, polar और charged जो दोनों हैं, they require, polar and charged both require protein assistance. They require some assistance of certain proteins to pass, right? Because polar molecules and charged molecules दोनों के दोनों आपके बैरियर को, कौन सा बैरियर, जो आपका लिपिड इंटीरियर है, मेम्ब्रेन का जो इंटीरियर है जो कि हाइड्रोफोबिक है, उसको क्रॉस करने के लिए वेरी वेरी नेसेसरी होते हैं. So they are a kind of required in much greater amount, right? Then next is, so this one cannot be the answer. Yeah. So they will not cross the membrane effectively without the protein carrier. So this statement is right. Sorry. This statement is right because polar and charged molecules will not cross the cell membrane effectively without the specific carriers. Yes, it's true. Right? They need certain assistance. So it's true. हमको बताना false कौन सा है. I'm sorry. Yeah. Then is each protein carrier will only bind and transport one or a few similar type of solutes. Yes, it's absolutely true. एक carrier जो है वो bind करेगा and transport करेगा एक ही type के solute को या उससे kind of similar solutes, right? So it can be the case. Each protein carrier will bind and transport one type of solute. एक ही type का solute को वो transport कर सकता है, or a few similar kind of stuff. So this is also kind of a correct statement that you see. When sugars such as glucose are always transported by facilitated diffusion carriers, this is kind of a not correct answer because आपका जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है वो एटीपीएस मतलब आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज करके भी बनता है, राइट? जो कि हमारा सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में यूज होता है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, right, which is majorly occurring in your small intestine, right? and इसको हम SGLT भी बोलते हैं, right? We call these transporters as SGLT, right? SGLT. वो अभी हम बताऊंगा मैं आपको क्या है ये SGLT, right? So sodium glucose co-transporter, right? So we'll study that in kind of a minute. But ये ATP के अंदर हम पढ़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब हम पढ़ेंगे ना तब हम बात करेंगे इसके बारे में, right?
So this is a kind of wrong statement कि sugars such as glucose are always transported. No, they are not always transported using this mechanism. They have ATP channels also. They have facilitated diffusion channels also, right? So it's not always. Then ions are typically transported by special proteins found in the membrane. Yes, it's absolutely true statement. It's an absolutely true statement, right? So I hope everything is going fine till now, right? I hope everyone is fine till now. All the points are kind of clear because it's a kind of revision thing, I guess, because everything I've covered in the class already. Right? Shall I move forward? चलें आगे? Because I can see chat box बड़ा खाली खाली सा है. कोई respond नहीं कर रहा है. बच्चे भी आज कम हैं. I don't know why. Only 10 students are watching. Yes, yes, yes. Okay, cool. Thank you so much. Yeah. So the next one is the membrane with unsaturated fatty acids are more flexible and fluid because the membrane with unsaturated fatty acids. I'm repeating again, ध्यान रखना. It is the unsaturated fatty acids. They are more flexible and fluid. Unsaturated वाले ज़्यादा flexible and ज़्यादा fluid क्यों होते हैं? Because unsaturated fatty acids closely packed to form order arrays. No, जो unsaturated होते हैं उनमें kink बनता है, right? तो अगर kink बनेगा तो they will not be able to pack बिल्कुल close, थोड़ा दूर दूर पैक होंगे, राइट? और उन्हीं गैप्स, ये जो दो गैप्स होते हैं वहीं पे आपका ऐसे कोलेस्ट्रॉल बीच में आके टक जाता है, राइट? So unsaturated fatty acids closely packed together, it's wrong. They do not closely pack, right? Because ऊपर खुद लिख रहा है कि unsaturated fatty acids are more fluid. अगर वो more fluid है तो वो closely pack क्यों करेंगे? तो ये तो गलत ही हो गया, right? Then we have next is unsaturated fatty acids have cis double bonds. ये ठीक है, cis double bonds that prevent the formation of stable bilayers. They do not prevent the formation of stable bilayers. However, they help in the formation of stable bilayers. ये stable bilayer बनाने में help करते हैं. ये stable bilayer बनाने में help करते हैं. So this is a first monolayer, मतलब for inner leaflet, outer leaflet. ये आपकी हो गई इनर लीफलेट, राइट? ये आउटर लीफलेट हो गया, ये इनर लीफलेट हो गया, राइट? सो दे आर हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइलेयर्स, राइट? क्योंकि ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. तो बाइलेयर जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं, दे आर काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल एंड इजीली मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स एक्सिस, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एंड अदर स्टफ मूवमेंट आर पॉसिबल, right? So unsaturated fatty acids have cis double bond. This is correct, but they prevent the stable formation of stable bilayers. Is kind of a wrong statement, right? Then we have saturated fatty acids have kink. No, unsaturated only will have. जहाँ पे double bond होंगे तो double bond को हम बोलते हैं unsaturated. तो जो unsaturated होंगे वहीं पे ही आपका क्या बनता है? Kink बनता है. So this is also again wrong. And the correct statement for this particular answer would be this one, C. This one, B1. The unsaturated fatty acid bend at cis double bond, thus preventing the close packing. ये जो cis double bond होगा जिसकी वजह से ये kink बनता है, right? Will help in the formation of this kink. ये जो kink है ये cis double bond की वजह से बना है और ये membrane को थोड़ा सा fluid करने में help करता है, right? Yes. Then we have next thing. So it is a kind of, I guess ये kind of क्वेश्चन इसको कह भी लो या काइंड ऑफ इट वाज अ काइंड ऑफ, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे था कि ये कैसा क्वेश्चन है,
ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, राइट? कोई लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन में, illogical kind of question. Then membrane proteins are synthesized on endoplasmic reticulum and they're transported to various organelle membranes. One hypothesis of the membrane protein sorting is hydrophobicity matching. That means हम hydrophobicity match करते हैं और on the basis of that we decide कि जो proteins है जो कि shorter transmembrane portion है, ऐसा protein जिसकी short transmembrane segment जो है जो membrane के अंदर है, this is transmembrane segment. तो जो ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट है वो अगर शॉर्ट है, राइट, दैट इज द प्रोटीन्स विद द शॉर्टर ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन वुड पार्टीशन इनटू थिनर मेम्ब्रेन्स. जिनकी छोटी मेम्ब्रेन है, शॉर्ट ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट है, वो थिन मेम्ब्रेन बनाएंगे, राइट? ये देखा गया. यू आर गिवन द फॉलोइंग 3 ऑब्जर्वेशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये 3 आपको ऑब्जर्वेशन दिए और इन में से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, राइट? सबसे पहले हम देखते हैं, इट वाज फाउंड दैट ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शंस ऑफ गोल्जी of proteins in Golgi membranes are shorter than those in the plasma membrane. That means it is saying जो transmembrane portion है Golgi के अंदर, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ Golgi के अंदर वो कह रहा है कि transmembrane portion क्या है, shorter है. It was found that transmembrane portion of the proteins in Golgi membranes is shorter. तो Golgi में short है और अगर short है तो membrane क्या है, thin है. सिंपल लॉजिक. पहली स्टेटमेंट की ऑब्जर्वेशन से हमने ये बताया. सेकेंड स्टेटमेंट में बता रहा है देन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इट इज लॉन्ग एंड इट इज थिक, राइट? देन सेकेंड बता रहा है कि प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ द बाइलेयर. जहां पे भी कोलेस्ट्रॉल होगा वहां पे थिकनेस आएगी, राइट? और थिकनेस आएगी तो आपकी जो चेन्स हैं वो काइंड ऑफ थोड़ी बहुत लॉन्ग आप कह सकते हो, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो ओवरऑल थिक है, राइट? तो चेन जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग है. And third thing is the phospholipid composition of Golgi and plasma membrane are same. जो phospholipid composition है वो दोनों की सेम है. Phospholipid composition is same for both, right? That means जो overall phospholipid की composition है, right? क्योंकि हमने बहुत सारी membrane proteins पढ़ी हैं, तो जो overall phospholipid जो कंपोजिशन है वो दोनों की सेम है. अब ऑन बेसिस ऑफ दीज 3 ऑब्जर्वेशन हम बताते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव लॉन्गर ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन. प्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? तो ये हमारा प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन they have long chain, we have already observed that. So proteins in the plasma membrane have long transmembrane segment, right, than the proteins in the Golgi membrane. So it's absolutely true, we have given this as a statement as a correct one. Then proteins in Golgi membranes have longer transmembrane. जो Golgi में है उनमें transmembrane ज्यादा है, तो ये opposite हो गया हमारी observation से, तो ये गलत हो गया. This is the wrong statement. Proteins of Golgi and plasma membranes have same length of transmembrane portion. No, they do not have. They have same composition, but the thickness is changed. Why? Because क्योंकि thickness जो है आपकी lipid composition पे नहीं depend कर रही, thickness जो है आपकी transmembrane segment पे depend कर रही है. तो ये चीज भी गलत हो गई. They both have same length of transmembrane portion. This is also wrong. They have composition same, not the transmembrane segment में. Then cholesterol is more in Golgi than in plasma membrane. कोलेस्ट्रॉल जो है गोल्जी में ज्यादा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कम है. ये फिर उल्टा हो गया. हमने बोला कि कोलेस्ट्रॉल जहां ज्यादा होगा वहां थिकनेस होगी, राइट? एंड थिकनेस होगी तो चेन लॉन्ग होगी, लेकिन चेन लॉन्ग कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है. एंड इट इज सेइंग कोलेस्ट्रॉल इज मोर इन गोल्जी. नो, कोलेस्ट्रॉल इज मोर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दिस also statement is wrong. So the correct answer for this would be the first one. Proteins in plasma membrane have longer fatty acid, a longer transmembrane portion than proteins of the Golgi membrane. Answer is 1. Right? I hope it's clear. Fine with everyone.
चलें आगे. So this is the next question. Yes sir, weird question. It was a weird question because it was not making any sense. तो आपने पहली स्टेटमेंट के अंदर ही आंसर को मेंशन कर दिया. It was found that transmembrane portion are shorter than in those in the plasma membrane. फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर ही आपका आंसर है, मतलब ये आंसर है. जरूरत ही नहीं आपको ऑप्शंस देखने की. फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो एंड आंसर्स का जवाब दो. इट्स अ काइंड ऑफ अ लिटरली अ काइंड ऑफ अ वियर्ड क्वेश्चन काइंड ऑफ स्टफ. पता नहीं क्यों बनाया क्वेश्चन. या तो कह लो इजी था बहुत ज्यादा, मे बी ये भी हो सकता है. या नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a diabetic patient has high blood glucose level due to reduced entry of glucose into various peripheral tissues in addition to other causes. अदर कारण के अलावा एक डायबिटिक पेशेंट है, उसका हाई ब्लड ग्लूकोज है, बॉडी के अंदर हाई ब्लड ग्लूकोज है, राइट, ज्यादा ग्लूकोज है ड्यू टू रिड्यूस एंट्री ऑफ ग्लूकोज. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो आपका नॉर्मल ब्लड से मेटाबॉलिज्म में नहीं जा रहा है, सेल के पास, सेल मेटाबॉलिज्म में नहीं जा रहा है, रिड्यूस एंट्री है, कम एंट्री है, राइट. देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन हाउएवर इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जो है, जो भी ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन है वो परफेक्ट है. वो क्या है? परफेक्ट है, राइट. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मे पुट बिलो to explain this particular observation and which of the following statement is or are incorrect. कौन सी statement गलत है, right? So the first statement says is glucose is transported into the cells of muscles by glucose transporters which are influenced by insulin receptor activation. It's absolutely correct because I've already told you कि जो muscles के अंदर glucose हैं, GLUT transporters जो हैं, राइट, मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताए थे कितने टाइप के, मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, राइट, मसल में, ब्रेन, हेक्सोकाइनेस जब हम बात कर रहे थे, राइट. सो वी हैव दैट हेक्सोकाइनेस ब्रेन में, मसल में, स्प्लीन में, लिवर में, राइट. सो वी हैव दैट काइंड ऑफ स्टाफ. तो ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्ट तब मैंने बताया था, राइट, कि इंसुलिन एक्टिवेशन के अंदर, मसल्स के अंदर, लिवर के अंदर, दे आर काइंड ऑफ इंसुलिन एक्टिवेटेड ट्रांसपोर्टर्स, दे आर एक्टिवेटेड बाय इंसुलिन, right. Then glucose is transported into the cells of muscles by glucose transporter which are influenced by the insulin activation. So this is a correct thing. Then next is glucose transport into the enterocyte. Enterocyte माने आपका normal small intestine के cells के अंदर, right. So glucose transport into enterocytes is mediated by sodium dependent glucose transporter. जो भी sodium dependent glucose transporter होते हैं, SGLT, sodium dependent glucose transporters, again they are not dependent on insulin. Absolutely correct. वहां पे इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता, वहां पे किस पे डिपेंडेंट है? इट्स ऑलरेडी रिटन, इट इज सोडियम डिपेंडेंट. Na प्लस एंड ग्लूकोज का जो है वो ट्रांसपोर्टर है, Na plus and glucose का ट्रांसपोर्टर, राइट. सो देयर इज नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ इंसुलिन काइंड ऑफ स्टफ. तो इसमें सोडियम जो है वो मेजर रोल प्ले करता है, राइट. इसके बारे में हम आज डिस्कस भी करेंगे. देन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अब अगर आप खुद देखो, एक तरफ हम बोल रहे हैं सेकेंड स्टेटमेंट में कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटेरोसाइट्स में इट इज मीडिएटेड बाय सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, एंड दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, right. So it is not by facilitated diffusion. This sodium and glucose transport is a kind of secondary active transport. It is a secondary active transport. It is a secondary active transport. We'll discuss that particular thing जब हम secondary active transport के बारे में बात करेंगे, तब मैं बताऊंगा कि क्यों secondary active है. Secondary active means एक particular molecule को अंदर लेकर आने के लिए सेकेंड मॉलिक्यूल की हेल्प ली जा रही है, राइट. सपोज सोडियम को अंदर लेकर आए, ग्लूकोज, सोडियम की मदद से हम ग्लूकोज को अंदर लेकर आए, एंड इनकी वजह से कोई एक सेकेंड मॉलिक्यूल जो है वो भी काइंड ऑफ इन्वॉल्व है. सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय नॉट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय sodium dependent glucose transporters, right, which are a kind of an active transport mechanism, right. So this statement is wrong. Third statement is wrong.
द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन मसल्स। ये प्रोसेस उल्टा लिख दिया, ये होना चाहिए था थर्ड में, एंड थर्ड वाला पॉइंट जो था वो यहाँ पे होना चाहिए था, राइट। तो द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन नॉट इन मसल्स। मसल्स के अंदर तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है जो कि इंसुलिन रिसेप्टर डिपेंडेंट होता है। So again, fourth statement is also wrong. So the correct answer for this will be third and fourth option, right? D wala, right? So I hope this point is kind of clear to everyone. Okay? It was a kind of a physiology complexed with cell biology, right? It was not entirely of cell biology question. It was complexed with kind of थोड़ा physiology भी mixed थी इसमें, राइट। बिकॉज अगर किसी को नहीं पता कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है ग्लूकोज एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी शो करता है, तो वो काइंड ऑफ क्वेश्चन फिर रह जाता, मिस हो जाता, राइट। सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स। Then coming on to this particular question, yeah, coming on to this question, you are studying a protein that inserts itself into a membrane, modern membrane, which is liposomes, during a reconstitution process. The protein has an N-terminal domain, which is being shown here. N-terminal domain. It has a C-terminal domain. So N-terminal domain, which is 18 amino acid hydrophilic segment. 18 amino acid का है, hydrophilic segment का है, that is located on the outside of the membrane. Membrane के outside है. A 19 amino acid hydrophobic transmembrane segment. 19 amino acid hydrophobic segment. Flanked by a negative and positive charge amino acid. और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं 19 अमाइनो एसिड्स, 19 अमाइनो एसिड का जो ये पोर्शन है, राइट, इट इज फ्लैंक्ड बाय अ नेगेटिव चार्ज एंड अ पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स। तो इस तरफ आपकी नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ आपकी पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड है, एंड अ सी टर्मिनल डोमेन जो कि ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट है एज डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टून। For proper reconstitution of the protein, which of the following strategies will be appropriate? So I have received majorly two answers for this particular question. The option number C and option number D. Can anyone give me जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट किया या किसी ने भी ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किया, इनमें से आप किसके पास गए, मतलब आपने कौन सा वाला सिलेक्ट किया, एंड which one of them is मतलब the correct reason, you have to tell me the correct reason for that particular thing as well. अगर आपने बोला कि removal of positive charge amino acids on C terminal, तो उसका क्या reason था? Because I've seen almost 20 मतलब 7 or 8 students have given this as the answer, 8 or 9 students have given this as the answer, and around 6 to 7 students have given this as the answer. Rest इन दोनों में थे, नहीं तो मेजोरिटी जो थी वो सी और डी पे थी। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसका सी आंसर क्या है और डी आंसर क्यों है, इफ यू हैव सिलेक्टेड दैट पर्टिकुलर थिंग? एनीवन? कोई बता सकता है मुझे? And if you selected any of the above thing also, even this and this, A or B also, you can tell that, not a problem. कि which of the following things you consider कि proper reconstitution के लिए कौन सी strategy would be the best? A, B, C or D? Many of the students have given the answer as C and D. So I just want to know what you have selected and why you have selected that particular thing for C and D. I'm just waiting for your responses. Yes, please. Yes, anyone, please. I'm waiting for the responses.
किसी को भी नहीं पता है या क्या चीज है? ऑलरेडी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्वाइट लेस, सो आई रिक्वेस्ट जो भी बच्चे बैठे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, टू प्लीज गिव द आंसर। क्या चीज आपको लगती है? आई गॉट कंफ्यूज्ड, स्किप्ड एंड गेस और चूज लास्ट, डजंट रिमेंबर। ओके, सी। Nikita says C because inside of the membrane is negative charge is present. Okay. So Nikita, can you please elaborate that particular thing? Ki if the membrane is negative charge inside, then protein का अगर आप positive amino acids निकाल दोगे towards the C terminal, what would happen? मतलब अगर positive रहेगा भी तो क्या problem रहेगा? Would it be creating any difference if the positive charge remain? अगर मैं पॉजिटिव रिमूव नहीं करता, पड़े रहने देता हूँ पॉजिटिव को, then what effect will be on the reconstitution? Inside of the membrane is negative, absolutely correct. तो हम पॉजिटिव को अगर रिमूव कर देंगे तो इंटरेक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल है इस पर्टिकुलर रिमूवल ऑफ पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड का? Anyone, any wild guess also, it's correct, not a problem. You can have a wild guess as well, not a kind of. Anyone? Okay, so I'll tell you, it's a kind of a thing which is kind of still confusing, right? जो कि अब जैसे सब बच्चों को हो रहा है, even kind of I was kind of very confused while putting this question for the test, right? Because you see, इसके अंदर हमारे पास C option के अंदर it is saying, you are absolutely correct Nikita that you have said, कि removal of positive charge amino acids from the C terminal will help stabilize and reconstitute, right? Because membrane जो है, जो liposomes होते हैं, they are generally kind of charged membrane structure, ठीक है? ये generally charged होते हैं, right? अब ये जो charged हैं, ये positive भी हो सकते हैं, ये negative भी हो सकते हैं, it depends, राइट? ये जनरली डिपेंड करता है कि आप कौन सा उसके अंदर मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो, कौन से फैक्टर्स यूज कर रहे हो जो कि उसको चार्ज बनाएंगे, राइट? तो लाइपोसोम्स जनरली जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, राइट? एंड दे आर काइंड ऑफ जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट? जो उनका नेगेटिव जो चार्ज मेजरली होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, राइट? एंड रिमूवल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स फ्रॉम द सी टर्मिनस would help stabilize. Also it will help टू मेंटेन द चार्ज जो कि इनसाइड की तरफ प्रेजेंट है, राइट? उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा. सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट as per the thing, right, that Nikita has already said. But one more thing that I want to like to add is कि कोई मुझे बता सकता है कि if we increase the length of this particular hydrophobic segment, अगर मैं ये 19 अमीनो एसिड की जगह ऐड डू as 22 और 25 अमीनो एसिड, what would be the effect of reconstitution? अगर मैं इसको बोलूं कि ये 25 अमीनो एसिड्स का मैंने कर दिया हाइड्रोफोबिक सेगमेंट को, तो ये जो सेगमेंट है, ये काइंड ऑफ थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, एंड द अमाउंट ऑफ हाइड्रोफोबिक सेगमेंट वुड इंक्रीज, राइट? जो मेम्ब्रेन को स्पैन कर रही है, क्योंकि वही पोर्शन को मैंने बढ़ा दिया है. तो कैन एनीवन टेल मी कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है on the membrane reconstitution? Basically, it's a kind of a very tricky question, I would say, because even I was kind of facing kind of some difficulty while answering this particular question.
I when I was answering, I selected D as the answer to increase the length of hydrophobic segment. But as Nikita is correct, the answer key of CSR, it was asked in June CSR 20, June 2014 CSR. This question was asked in June 2014, right? And the answer key gives the C option as correct. The answer key gives C option as correct, right? So it's absolutely correct. The thinking is right. बट आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि क्योंकि मुझे उसके अंदर डी ऑप्शन भी ठीक लग रहा है. आई वोंट से कि सी गलत है, बट आई एम थिंकिंग कि मुझे लगता है कि डी ऑप्शन भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए ठीक है. Right, I was trying to find the answers from many sources, from books and stuff, but I didn't get any kind of relation of liposomes and this C terminal and hydrophobic length of kind of stuff. So just think of it, right, and we'll discuss more. अगर किसी को कुछ मिलता है, we'll discuss this particular question again in the next class, right? So please try to find out the correct answer with the explanation, right? Answer की के अंदर C दिया हुआ है, CSR की explanation निकिता ने दिया. It was absolutely logical kind of thing. It's absolutely correct. I just wanted to know कि इसका D आंसर भी हो सकता है, C आंसर भी हो सकता है, एंड दोनों का अगर आंसर सही है तो what would be that kind of, you can say, the explanation kind of stuff for that particular thing, कि इसको आप क्या explain करोगे उस particular चीज के लिए, right? So I guess this is the kind of a question that you can practice at home and you can find it out stuff because it will increase. बहुत ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा. Yeah, Chanu is saying please explain it. So I just said कि removal of positive charge amino acids from the C terminal is the correct answer, which says that कि because the long fatty acid chain is represent the stability of the membrane. It's not sure, right? Because if the fatty acid tails are long, it's not a problem, but the trans membrane, हम तो प्रोटीन की अमाइनो एसिड सीक्वेंस को बढ़ा रहे हैं, फैटी एसिड को थोड़ा ना बढ़ा रहे हैं. We are increasing the length of the protein hydrophobic segment, not the स्टेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर मतलब लिपिड में, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोफोबिक सेगमेंट को बढ़ाता हूं तो मेम्ब्रेन प्रोटीन की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, राइट? वो अच्छे से मेम्ब्रेन में फिट हो जाएगा, राइट? एंड रिकंस्टिट्यूशन के अंदर आई गेस उसको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, राइट? एंड चानू इज सेइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन. सो सेवेंथ जो इसका आंसर है दैट इज रिमूवल ऑफ पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड फ्रॉम द सी टर्मिनल. अगर मैं सी टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर दूं, राइट? बिकॉज हमको ऑलरेडी पता है मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज है एंड पॉजिटिव चार्ज वुड काइंड ऑफ इंटरफियर विद दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शंस, राइट? So because of that, if I chop off this particular positive charge of the membrane, what would happen? It will be kind of help in reconstitution. And also ये तो नॉर्मल मेम्ब्रेन के चार्ज के बारे में बात हो रही है. दूसरा जो चार्ज एक एक्स्ट्रा बैरियर काइंड ऑफ क्रिएट करता है वो है लाइपोसोम्स का चार्ज. लाइपोसोम्स जो हैं वो हमारे जनरली चार्ज मॉलिक्यूल, चार्ज मेम्ब्रेन होती हैं जनरली, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं एंड नेगेटिव भी हो सकती हैं. दे आर जनरली काइंड ऑफ नेगेटिव एज वेल एंड पॉजिटिव एज वेल. सो in order to balance that particular thing also, chopping off the positive amino acids on the C terminal would be a good idea, right? But जो D option है that is changing the length of hydrophobic segment of the protein, we are saying not the fatty acids. तो अगर मैं प्रोटीन की हाइड्रोफोबिक सेगमेंट को ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट को बोल दो, राइट, उसको इंक्रीज करता हूँ तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट? दिस इज द क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड कि अगर ये बीच के पोर्शन को मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा, right? So this is the stuff that you need to find it out, right? So this is the last question, which says match the enzymes in column A with their respective biological functions in column number B, right? It was a very easy question, right? So if I'll just see, हमने पता है स्क्रैम्बलेज क्या होते हैं, राइट? यू नो स्क्रैम्बलेज क्या होते हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि दोनों उनको मेंटेन करते हैं, राइट? मूवमेंट ऑफ मतलब लेटरल मूवमेंट काइंड ऑफ शो करते हैं, राइट? मतलब वो फॉस्फोलिपिड की कोई भी कंडीशन को कैरी कर सकते हैं, राइट? ऊपर से नीचे
from inner to outer and outer to inner, as well as a kind of a basic kind of lateral thing, and using a concentration gradient, right? और वो concentration gradient का use करते हैं, right? उनमें ATP नहीं लगता है. मैंने 3 नाम बताए थे. We have flipases, we have flopases, right? And we have scramblases, right? तो ये इनके लिए हमको ATP चाहिए होता है, और इसके लिए हमको कोई ATP नहीं चाहिए. दे आर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट ओनली, राइट? तो सीधा सीधा सा इनके अंदर हम देख रहे हैं कि ये काइंड ऑफ जरूरत ही नहीं है. इसी के अंदर आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो डायरेक्टली विदाउट सीइंग द अदर ऑप्शंस, दीज आर टू आर रॉन्ग बिकॉज एस इज स्टैंडिंग फॉर 4. सो दीज ओनली टू वुड बी द करेक्ट आंसर. इनमें से कोई एक होगा, राइट? अब इनमें से अगर कोई करेक्ट है तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या बता रहा है? नेक्स्ट हम सिंपल देखते हैं लाइपेसेस. अगर सिंपल बेसिक में कंसीडर किया जाए, राइट, दैट इज पी, राइट? पी दोनों के अंदर 3 है, सिंपल, जरूरत नहीं है, राइट? एंड वी ऑल नो कि लाइपेसेस क्या करते हैं? लिपिड मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस. अगेन गॉन, राइट? देन फ्लिपेसेस एंड फ्लोपेसेस. सो वी हैव फ्लोपेसेस जो क्या काम करते हैं? It catalyzes the ATP dependent translocation of plasma membrane from the cytosolic to the extracellular leaflet. Flopases, right? मैंने बताया था कि वो उल्टा मूव करते हैं, right? From this to this. Flopases and flipases are like this, and flipases are like this, right? So R क्या क्या हो गया? R हो गया 2. R2 अगर हो गया तो ऑप्शन नंबर D would be the correct answer, right? So I guess this is also very much clear to everyone, right? सही है. So these were all some of the questions that I've given in the exams, and can be all these questions were of CSR net, right, and gate, which were asked in some of the previous year papers, right? So some mixed kind of stuff था, right, जो भी इसमें पूछा गया था, right? So you just have to need to remember 2 things for that, राइट? इसके अंदर आप मतलब थोड़ी बहुत आपको क्योंकि चीजें याद करनी पड़ेंगी. इट्स अ काइंड ऑफ काइंड थोड़ा बहुत जैसे कह लो कि मेमोरी बेस्ड काइंड ऑफ थोड़ा सब्जेक्ट है. इट्स नॉट काइंड दैट मच एप्लीकेटिव काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज यू नो कि देखो स्क्रैम्बल इज डायरेक्ट स्टेटमेंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव का. तो यू जस्ट नीड टू काइंड ऑफ रिमेंबर सम स्टफ्स मोर इन सेल बायोलॉजी, राइट? अप्लाइंग वाला पार्ट आएगा बट वो आगे है. अभी हम काइंड ऑफ थोड़ा बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, राइट? So I hope it's everyone clear, and we are now ready to move to study the membrane transport, that is carriers, today, right? So shall we move forward? चले आगे? Oh, why the strength is very very less? I don't understand. Okay, no problem. Okay, so cell biology, membrane transport. In the last class we discussed about the passive transport. जिस passive transport के अंदर हमने बात करी थी diffusion process की. Then we discussed about डिफ्यूजन के बाद हमने बात किया था ऑस्मोसिस के बारे में, राइट? एंड देन वी मूव्ड ऑन टू आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. एंड इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आई टोल्ड कि जो ट्रांसपोर्ट है वो 2 चीज़ों से मीडिएट हो सकता है, या तो कैरियर प्रोटीन्स हो सकते हैं जिनको हम परमिएसेस भी कहते हैं, एंड चैनल प्रोटीन्स भी होते हैं, राइट? इनमें से हो सकता है. These are the books for reference. I guess everyone knows about that, and I've already sent these 2 books in the Telegram group in the form of an ebook, right? आप दोनों बुक्स निकाल ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, free to use, right? I'll also probably share the other subjects like genetics हो गया, immunology हो गया. I'll share that books in some more time, right? So थोड़े टाइम के अंदर मैं वो बाकी बुक्स भी and कुछ थोड़े से नोट्स वगैरह हैं, I'll share that soon, right? Yeah. So last class में हमने बात किया था और facilitated diffusion, and please provide us some new mnemonics for cell biology that help us in the exam. अभी कुछ ऐसा आया नहीं है रिमेम्बर करने वाला,
क्योंकि अभी हम थोड़ा थोड़ा बहुत बेसिक काइंड ऑफ स्टफ पढ़ रहे हैं, अभी कुछ इतना रिमेम्बर करने वाली चीज आई नहीं है कि उसको निमोनिक्स के थ्रू मैं बताऊं, राइट? एज एंड व्हेन थिंग्स विल कम आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू, राइट? बट अभी ऐसा कुछ इतना रिमेम्बर का सीन है नहीं, इट्स जस्ट अ बेसिक स्टफ आई गेस। ये तो आपने ग्रेजुएशन में भी एंड इवन यू ऑल वुड बी स्टडिंग इन योर मास्टर्स एज वेल, पढ़ा ही होगा, राइट? ओके, सो बुक्स, तो हम बात कर रहे थे कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि कैसे कैरियर प्रोटीन्स जो हैं दे आर काइंड ऑफ रिलेटेड और दे आर एक्टिंग इन अ सिमिलर वेज टू दैट ऑफ एंजाइम्स, राइट? सो वी डिस्कस्ड अबाउट enzyme kinetics and carrier protein kinetics. We discussed about their specificity. We discussed about their inhibition process, right? And at the last I discussed about कि कैसे carrier proteins differ करते हैं from the enzymes, right? And जिसके अंदर हमने बात किया था कि they differ, carrier proteins differ from the enzymes in two possible ways, right? सबसे पहली चीज, number of solute they transport, number of solute they transport, and second is the direction of transport. Second is the direction of transport. And on the basis of these two factors, we classify the carriers as either a uniporter or a co-transporter. A uniporter or a co-transporter. And in co-transporter again we have two basic types. We have, everyone knows, symporter and antiporter, राइट? एंड और ये भी चीज हमने बताई थी कि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, दे जनरली चेंज द कन्फर्मेशन, राइट? उनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है और ये मूव करते हैं। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट, सिंस इट्स अ डिफ्यूजन प्रोसेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो they are moving the solute from a high to low concentration, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन और नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू मूव करते हैं, जो कि इस फिगर के अंदर भी आप कह सकते हो कि डिपिक्ट किया हुआ है, राइट? जो कि इस फिगर में भी डिपिक्ट किया हुआ है, राइट? तो इस फिगर में क्या दिखा रहा है कि ये आपका चैनल प्रोटीन है या कैरियर प्रोटीन है, सॉरी, ये आपका कैरियर प्रोटीन है, एंड जैसे ही सोल्यूट इसके ऊपर बाइंड हुआ, इट इज एन occulted state, that means a kind of a partially stuffed enzyme substrate complex जैसे हम जिसको बोल सकते हैं, राइट? तो ये आउटवर्ड ओपन है, मतलब जहाँ पे सोल्यूट को कैप्चर करना है, देन दिस इज एन इंटरमीडिएट स्टेट एंड दिस इज ओपनिंग द इनवर्ड्स, या जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो है, राइट? सो हाई सोल्यूट में, हाई जगह पे, हाई कॉन्सेंट्रेशन में इट बाइंड्स, एंड एट लो कॉन्सेंट्रेशन इट विल release at low concentration, and it mediates the movement from high concentration gradient to the low concentration gradient, the normal process of a carrier protein, चाहे वो यूनिपोर्टर हो चाहे वो को ट्रांसपोर्टर हो, सबका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर होता है इन दैट पर्टिकुलर, इन दिस बेसिक सेंस, राइट? एंड वी डिस्कस्ड अबाउट कि वो यूनिपोर्ट हो सकता है, सिम्पोर्ट हो सकता है, एंटीपोर्ट हो सकता है, दैट इज अ कपल्ड ट्रांसपोर्ट, और इट कैन बी अ यूनिपोर्ट, राइट? एंड द मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड लाइक दिस। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यूनिपोर्टर्स की, एंड यूनिपोर्टर का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं, दैट इज अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर और ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, राइट? अगर मैं यूनिपोर्टर्स के बारे में बात करूं, यूनिपोर्टर्स आर ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो दे आर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, राइट? द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सिंगल सोल्यूट फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अनदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन is called as uniport, and the molecules or the carriers that are involved in this process, they are called as uniporters, right? So we have glut transporters. So अगर मैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, सो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं जनरली, ये ऐसा काइंड ऑफ रिमेम्बरिंग की जरूरत नहीं है, दे आर 500 अमीनो एसिड्स लॉन्ग, they are 500 amino acids long with 12 transmembrane segments, 500 amino acids long with 12 transmembrane segments, and are family of
दे आर फैमिली ऑफ 14 प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जिनका ये इन्वॉल्वमेंट होता है, काइंड ऑफ जस्ट एन इंफॉर्मेशन, नो नीड टू रिमेंबर द स्टफ, राइट। एंड ये सारे के सारे जो 14 प्रोटीन्स हैं, इनमें क्या खास बात है या क्या डिफरेंस है, दे डिफर इन देयर काइनेटिक प्रॉपर्टीज, इनका काइनेटिक प्रॉपर्टी अलग अलग, दैट मीन्स द Vmax, द Km, ऑल दीज आर काइंड ऑफ स्लाइट डिफरेंट, बिकॉज ऑफ दैट दे आर काइंड ऑफ लोकेटेड इन डिफरेंट टिश्यूज, सो काइनेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर करती है। इवन टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफर करता है, राइट। एंड रेगुलेशन, तीनों चीजें, काम एक ही है, टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, but they are a kind of working in different mechanisms, or they have a kind of different regulation steps, right। तो अगर मैं एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो मैं 5 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के आपको नाम बता रहा हूं, दैट इज ग्लूट 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये काइंड ऑफ थोड़ा इंफॉर्मेशन है जो आप पढ़ सकते हो, बात कर सकते हो। ग्लूट 1 जो है वो आपके आरबीसीज में प्रेजेंट है, एरिथ्रोसाइट्स में। ग्लूट 2 जो है वो आपका लिवर में प्रेजेंट है। 3 जो है वो आपका ब्रेन में प्रेजेंट है। 4 जो है आपका मसल्स एंड फैट में प्रेजेंट है। एंड 5th में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। आरबीसी, लिवर, ब्रेन, मसल, फैट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, दीज आर द 5 बेसिक, 14 फैमिलीज हैं, आई हैव जस्ट गिवन द नेम्स ऑफ मेजर 5। तो एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज में, लिवर में, ब्रेन में, मसल में, फैट में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो 1, 3 एंड 5 हैं, द 1, 3 एंड 5, दैट मीन्स आपका आरबीसी, ब्रेन एंड liver 1, 2, 3 and 5, 1, 2, 3 and 5, small intestine, these are constantly expressed on their cell surface, ये constitutive express है, constitutively expressed, सेल सरफेस पे कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते हैं, इनका कोई रोल नहीं है, मतलब ये हमेशा एक्सप्रेस होंगे ही होंगे अपने सेल के सरफेस पे, टू कैप्चर द ग्लूकोज एंड ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके टिश्यूज में भेजने के लिए दे आर कॉन्स्टेंटली और कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस। वेयर जो फोर्थ वाला है विच इज मसल एंड फैट, ये मैंने अभी आपको थोड़े क्वेश्चन में हमने बताया कि दे आर स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन, दे आर स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो सिक्रीट होगा एंड इंसुलिन विल टेल दीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स टू गो टू द मेम्ब्रेन एंड कैप्चर दैट पर्टिकुलर स्टफ। टिल देन जो ग्लूकोज जो ये कहाँ पे है, इट विल बी स्टोर्ड इन वेसिकल्स, ये कहाँ पे स्टोर्ड होगा, ये वेसिकल्स में स्टोर्ड होते हैं, राइट। ये वेसिकल्स में स्टोर होते हैं, इंसुलिन आएगा, दे विल गेट एक्टिवेटेड एंड देन दे विल मूव टू द मेम्ब्रेन टू कैप्चर द ग्लूकोज, राइट। और इनका रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज गिवन बाय, बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे माइकलिस मेंटन इक्वेशन, आई गेस ऑलरेडी यू वुड हैव स्टडीड इन योर बीएससी एंड एमएससी, सो इट इज द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज गिवन बाय v is given by Michaelis Menten equation which is v is equal to Vmax which is the maximum velocity जो कि वो reach करेगा a particular जो ग्राफ होगा, right, 1 plus km by c, 1 plus km by c, it is a kind of a depiction of Michaelis Menten equation only, right. So the rate of transport is given by this particular equation for GLUT transporters or uniporters, you can specifically say, जिसके अंदर Vmax क्या है, it is the maximum transport velocity, जो आपका km है वो क्या है, Vmax by 2 पे जो concentration होती है, solute concentration या substrate concentration at Vmax by 2, that is half the maximum velocity, उसको हम km बोलते हैं, and c is the concentration of the substrate or the solute, राइट। सबस्ट्रेट हम जनरली एंजाइम की लाइन में बोलते हैं, अगर हम एंजाइम के बारे में बात करते हैं, अगर हम ट्रांसपोर्ट स्टफ में बात करें तो वी जनरली से इट इज अ सोल्यूट स्टफ, राइट। तो Km जो है वो एक एफिनिटी मेजरमेंट है, क्या है, एफिनिटी मेजरमेंट, हाई Km लो Km जो है वो एफिनिटी बताता है कि कितना उसको प्यारा है, कितनी जल्दी वो एक्सप्रेस होगा, कितनी जल्दी वो काम करेगा, राइट। सो दिस इज अबाउट अ बेसिक स्टफ जो कि हम देखते हैं, राइट, ओके। अब जो ये बेसिक थी दैट वाज फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की एक खास बात ये है
कि जैसे भी मैंने बताया कि कन्फर्मेशनल चेंज होता है, राइट। एज द कन्फर्मेशनल चेंज जो हो रहा है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स का, वो रिवर्सिबल काइंड ऑफ स्टेप है, राइट। इट इज नॉट अ परमानेंट स्टेप, राइट। ऐसा नहीं है कि चैनल प्रोटीन ने एक बार ग्लूकोज को ले लिया, वो नीचे जाके छोड़ देगा, तो इट इज अ काइंड ऑफ परमानेंट स्टेप, अब दूसरा ही ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को लेकर आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल स्टेप, राइट। सो दे आर काइंड ऑफ मूवेबल इन आइदर डायरेक्शंस, आउटसाइड से इनसाइड मूव कर रहा है, इनसाइड से आउटसाइड भी मूव कर सकते हैं, राइट। इसकी वजह से दे कैन ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन, राइट। बट देर इज अ स्पेसिफिक ग्रेडियंट काइंड ऑफ स्टफ, ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी चलना शुरू हो जाएगा, राइट। दे हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट कि किसने अंदर आना है, किसने बाहर जाना है, कब किसने अंदर आना है, कब किसने बाहर जाना है, राइट। इट इज अ फिक्स थिंग। सो वी कैन से कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है, राइट, सिंस इट इज अकरिंग और इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, सो जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर्स, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, राइट, वो क्या होता है, वो एक रिवर्सिबल डायरेक्शन में होता है। दैट मीन्स इट कैन बी आइदर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा नहीं है कि कभी भी अपनी मर्जी से हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बिकॉज सिंस वी से इट इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट। तो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का वो ग्रेडियंट अच्छे से बनेगा, वहीं पे ये अपनी चीजें करेंगे, राइट। इन लिवर सेल्स जो ये ऑपोजिट मैकेनिज्म होता है जनरली, राइट। जनरली हम बोलते हैं कि ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है, राइट। सो इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द सेल्स, राइट। बट इन लिवर सेल्स इट इज काइंड ऑफ रिलीज्ड इनटू सर्कुलेशन। लिवर के अंदर ये मैकेनिज्म जो है, जो उल्टा डायरेक्शन होती है, वो जनरली कहाँ मिलती है आपको, लिवर के अंदर मिलती है, राइट। इन लिवर सेल्स ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड, ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड होता है एंड इज रिलीज्ड इनटू सर्कुलेशन। दैट मींस वो बन रहा है अंदर, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो आउटसाइड हो रहा है, राइट। लेकिन हो कहाँ रहा है, अगेन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही वो मूव कर रहा है, राइट। सो इट इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बट इट इज काइंड ऑफ अकरिंग इन एन ऑपोजिट मैकेनिज्म। इट इज नॉट ऑलवेज, हमेशा सेल के अंदर लेने का नहीं होता ग्लूकोज, can be sometimes outside also. So glucose is synthesized and released outside for circulation. And the process of glucose synthesis in liver is gluconeogenesis, जो कि आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, gluconeogenesis, right? So this was about a basic stuff जो कि हमने बात किया था, जो मैंने बताया अभी आपको यूनिपोर्टर्स के अंदर, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ा है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, right? So the next thing is that we need to study is that is co-transporters. Co-transporters, तो co-transporters क्या होते हैं, co-transporters वो होते हैं जो कि मोर देन वन सोल्यूट को कैरी करते हैं। दैट मीन्स टू सोल्यूट्स को, जनरली टू होते हैं, दे मीडिएट अ कपल्ड सोल्यूट फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू अनदर साइड, राइट। तो अ कपल्ड सोल्यूट, कपल्ड मीन्स एक दो, राइट, और साइमल्टेनियस मूवमेंट होती है, right? They are coupled movement of solute from one side of the membrane to the inner side of the membrane, and they can be of two categories, जिसके अंदर मैंने आपको बताया, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, if both the solutes they are moving in same direction, we call that as symport. And if one is moving outside and one is moving inside or an opposite direction anyway, right, अगर opposite direction है, we call that as an antiport. We call that as the phenomena we call as antiport. So the transport involves either a symport mechanism or an antiport mechanism. The example for symport mechanism is oxygen transport, जो आप प्लांट्स में देखोगे, राइट। एंड अगर एनिमल्स के केस में हमने देखना है तो वही सेम सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, SGLT, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट SGLT, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, राइट। वो सिम्पोर्ट है, it's not, I'm not talking about facilitated diffusion here, I'm just giving the example of symport. Symport means दो molecules का transport हो रहा है, दो solutes का transfer हो रहा है in the same direction. तो sodium and glucose are moving in the same direction, right? It's just that. So it is a symport. So that's the example of symport. Then the second thing is antiport.
एंटीपोड का आपका एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ट्रांसपोर्ट बाय बैंड 3 प्रोटीन। जो बैंड 3 प्रोटीन है CO2 ट्रांसपोर्ट के अंदर एंटीपोड जो है वो इन्वॉल्व होता है। वी विल डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ देम इन जस्ट अ मिनट, right? So we have symport and antiport which are used in active transport mechanism and thus अब हमको पता है symport और antiport ये स्पेसिफिकली डिफ्यूजन प्रोसेस के नहीं है, राइट? ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में काम करेंगे। बोथ सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट आर आल्सो इन्वॉल्वड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि अभी ये बताया मैंने, सोडियम एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। देयरफॉर these symport and antiport they do not specify anything about कि कैसा एनर्जेटिक्स होगा, कितनी अच्छे से मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करेगा, उसका क्या Vmax होगा, क्या Km होगा, वो इसके बारे में नहीं बताता है, राइट? So symport and antiport does not tell or does not specify anything about the energetics। एनर्जेटिक्स के बारे में वो कुछ नहीं बताता है, चाहे कोई भी सिम्पोर्ट हो या एंटीपोर्ट हो। एंड इवन इट डजंट टेल अबाउट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी कि वो प्रोसेस डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसके बारे में भी सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट नहीं बताता। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ में प्रेजेंट है। इवन वी कैन सी दिस सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हमको देखने को मिलते हैं। इसीलिए दे आर अ काइंड ऑफ, they do not give any energetic kind of stuff and also the spontaneity of the reaction, right? So I'll just go in brief now with an example that we said is transport of oxygen transport. I'll just take this in a very brief manner because it's a botany kind of stuff. In small intestine, GLUT facilitated diffusions are also present along with SGLT. No, it's not present in small intestine actually. जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यू हैव सर्टेन डिविजन्स, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी आपकी डिविजन्स हैं, राइट? इनिशियल पार्ट, देन द मिडल पार्ट, इलियम, जोजिनम एंड स्टफ। तो दे आर अ काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली टू बी प्रेजेंट। अगर मैं बोलूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, दे आर नॉट एग्जैक्टली प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू बी प्रिसाइज, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका सोडियम एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मेजरली रोल प्ले करता है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स का रोल नहीं होता है, क्योंकि वहां पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होती है, राइट? वहां पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ग्लूट 5 जो मैंने बता रहा हूँ, दे आर अ काइंड ऑफ वर्किंग एज एन SGLT काइंड ऑफ स्टफ। बाकी जब हम वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जब तुमको बताएंगे सर कि कैसे ग्लूकोज का पूरा एग्जैक्ट ट्रांसपोर्ट होता है, राइट, हाउ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड स्टफ इज टेकिंग प्लेस, आई गेस प्रोबेबली वहां पे आपको क्लियर होगा। बिकॉज क्योंकि आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना होता है, to maintain that concentration gradient of glucose, sodium and जो भी associated channels हैं उसके साथ में, right? तो वहां पे आपको ये मेन चीज यूज होएगी, GLUT and SGLT, right? All GLUT transporters are necessarily not facilitated diffusion one. This also thing is to be kept in mind. All GLUT transporters are not necessarily facilitated diffusion वाले, ठीक है? So in just brief, I'll talk about what is the transport of oxygen, क्योंकि ये थोड़ा botany stuff है and I'm belonging to zoology background stuff. So just a case of example जो कि हम देखते हैं ऑक्सीजन के अंदर। तो जो ऑक्सीजन है, राइट, उसकी जो मूवमेंट होती है, ऑक्सीजन इज एन हार्मोन, एवरीवन नोज कि इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप्स, शूट टिप, रूट टिप, राइट? ठीक है, मेजर साइट जहाँ पे सेल डिवीजन, एक्सेस सेल डिवीजन होती है, वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, राइट? जो यंग लीव्स हैं, जो आपकी यंग लीव्स हैं, वो आपकी एक्चुअली जो है वो मेजर साइट है ऑक्सीजन प्रोडक्शन की, राइट? यंग लीव्स आर द मेजर साइट ऑफ द ऑक्सीजन प्रोडक्शन। एंड जो ओल्ड लीव्स हैं वहां पे इनफ हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होता है एंड दे आर मोर सेंसिटिव टू इथाइलिन। जो ओल्ड लीव्स हैं,
ओल्ड लीव्स आर सेंसिटिव टू इथाइलिन, और इथाइलिन क्या है, इथाइलिन जो है वो काइंड ऑफ लीफ फॉल के अंदर काम करता है, राइट, एब्सेशन में, राइट। तो इथाइलिन क्या है, एक गैशियस हार्मोन है, एंड इट कॉजेज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एज वेल एज द लीफ फॉलिंग एंड स्टफ। ठीक है, तो ओल्ड लीव्स जो है वो इथाइलिन की तरफ मेजरली इंक्लाइंड है, वेर एज जो यंग लीव्स है, क्योंकि उनको ग्रो करना है, दे आर काइंड ऑफ न्यूली बॉर्न काइंड ऑफ स्टफ, सो दे आर काइंड ऑफ मोर ऑक्सीजन प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द यंग लीव्स, राइट। ओके, अब जो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है वो दो तरीके से हो सकता है, राइट। इट कैन बी, तो ये आपका अगर बेस है प्लांट का, राइट, आई एम जस्ट ड्राइंग अ स्टफ, तो ये आपका बेस है प्लांट का, राइट, और ये आपकी शूट है ऊपर, राइट, सॉइल के ऊपर अगर होगा तो शूट है, एंड उसके एपिकल के टाइम पे यहाँ पे आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो दिस इज शूट, एंड इवन नीचे वाली साइड में आपका क्या है, रूट है, क्या है, रूट है। सो द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन शूट, शूट के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, जो शूट है, राइट, उसके अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, सिंस टिप्स पे हमने बोला कि टिप्स पे सिंथेसाइज होता है, राइट, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द टिप्स, तो शूट के अंदर टिप्स में सिंथेसाइज होता है, तो द मूवमेंट इज फ्रॉम टिप टुवर्ड्स द बेस, फ्रॉम टिप टुवर्ड्स द बेस ड्यूरिंग शूट के टाइम पे, तो द मूवमेंट इज कॉल्ड एज बेसिपिटल मूवमेंट, बेसिपिटल मूवमेंट, राइट। वेराज अगर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन रूट के केस में बात करें, तो रूट टिप्स भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, रूट टिप्स भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, बट द मेजर डिफरेंस इज दे आर डिपेंडेंट ऑन शूट्स फॉर देयर प्रोडक्शन, दैट मीन्स some amount of oxygen needs to be transported from this particular stuff to the roots, then only, then only they'll be able to amplify and they'll produce, right, but some amount is need to be transported from shoot towards the root, right, and this type of movement from base to the tip, यहाँ पे टिप से बेस हो रहा था, यहाँ पे बेस से टिप पे हो रहा है, and this type of movement from base to tip is called as the acropital movement, acropital movement, basipital and acropital, all these stuffs you will be studying in great detail in plant hormones जब आप पढ़ोगे, right, उसमें थोड़ा सा ज्यादा आएगा, right, okay, I am just giving a glimpse kind of stuff, ठीक है, छोटा छोटा। देन जो ऑक्सीजन की मूवमेंट है, जो ऑक्सीजन की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन की जो मूवमेंट है वो हमने बताया कि इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ सिम्पोर्ट, राइट, एंड ऑक्सीजन जो है वो आपकी दो फॉर्म्स के अंदर जनरली मिलता है, कॉमन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज, common form of oxygen is IAA, or you can say indole 3 acetic acid, indole 3 acetic acid, it's IAA or indole 3 acetic acid, right, and IAA can exist in two forms, this IAA can be exist in two forms, either in the molecular form, that is IAAH, or in the anion form, that is IAA minus, anion form Ia minus, or in the molecular form, or in the molecular form called IAAH, इन फॉर्म में हो सकता है, molecular form में या anion form में, 70% it is existing in the IAA minus form, right, so the major form is IAA minus, right, तो जो ट्रांसपोर्ट अगर ऑक्सीजन का हो रहा है वो कपल्ड में है, राइट, कपल्ड इन द सेंस कि अगर आपका मूवमेंट सपोज ऐसे है, राइट, राइट, ये आपका ट्रांसपोर्ट है, तो आई ए ए माइनस विल मूव इनसाइड और फ्रॉम द शूट टिप टू द बेस, राइट, फ्रॉम सेल टू सेल, राइट, तो जो मूवमेंट होती है वो सेल टू सेल है, पहले एक सेल के अंदर मूवमेंट होगी, फिर दूसरे सेल में, फिर तीसरे सेल में, तो सेल टू सेल मूवमेंट होता है, राइट, थ्रू द सेल्स, कौन से सेल्स, सेल्स का नाम है पैरनकाइमा सेल्स, जाइलम पैरनकाइमा, जाइलम पैरनकाइमा सेल्स, xylem parenchyma cells
help or move the oxygen from shoot to base and base to root, right? Root tip from cell to cell, cell cell communication kind of stuff. ठीक है. And movement is IAA stuff जो है वो अंदर जाएगा and it is coupled with H plus inside. तो आपका आउटसाइड जो है एक सेल के अंदर the movement is in the form of anionic form and then it is moving in the molecular form IAAH. It is moving in the form of IAAH. तो मेजर फॉर्म अनायनिक है पहले, फिर वो आपका क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म बनेगा. एंड अगेन जब आप ग्रेटर डिटेल में ट्रांसपोर्ट करोगे ये IAH फिर से ब्रेक डाउन होता है IAA माइनस एंड अगेन H प्लस, जिससे बना था उसी से ही डिसरप्ट होगा. जो आप मूवमेंट सेल टू सेल कम्युनिक इसमें पढ़ोगे, राइट, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जब पढ़ोगे तब उसके अंदर पता चलेगा कि जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं ये पहले उनको कंबाइन करते हैं, फिर देयर आर डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स और डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म जिसके अंदर यही मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है ये दो पार्ट्स में टूट, इसको रिएक्शन को IAH को मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को टू पार्ट में तोड़ता है एंड दे आर अगेन एबल टू क्रॉस दिस मेम्ब्रेन, right? They are again able to cross this membrane because this anionic form is required to cross the membrane, right? या कुछ stuff यहाँ पे पास ऑन करने के लिए anionic form की जरूरत होती है, इसीलिए यू कैन से कि ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा मेजरली आपका anionic आयन फॉर्म में प्रेजेंट है एंड it is coupled with the transport of H plus, right? So oxygen is coupled with the formation of H plus. So IAA is transported like this. So this is the kind of a basic transport of oxygen. ठीक है. बाकी डिटेल में जब आप पढ़ोगे कि कैसे कैसे ऊपर नीचे आ रहा है, बॉटनी के स्टूडेंट्स को आई गेस पता भी होगा क्या कैसे होता है, राइट. देन सेकंड एग्जांपल जो मैंने बताया, सेकंड एग्जांपल हमने बताया था ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट का. सेकंड एग्जांपल मैंने बताया था ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स का, जिसके अंदर ग्लूकोज जो है इट इज मूविंग इनसाइड, राइट. ग्लूकोज इज मूविंग इनसाइड बाय यूजिंग वन सोडियम, राइट. एक सोडियम का यूज करके ग्लूकोज साथ में अंदर आ रहा है, राइट. एंड इट इज जनरली टेकिंग प्लेस इन आपका कहाँ पे, इंटेस्टिनल एपिथेलियम, इंटेस्टाइन में, राइट. ग्लूकोज एंड सोडियम दे आर अ प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये काम करेंगे, राइट. इट इज पम्प थ्रू दी गट ल्यूमन टू द इंटेस्टाइन एपिथेलियम के अंदर ये मूव करते हैं. एंड ये ग्रेडियंट को मेंटेन करने वाला कौन है, सोडियम की कंसेंट्रेशन को कौन मेंटेन करेगा ताकि ग्लूकोज अंदर आ सके, इट इज द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, sodium potassium pump या sodium potassium ATPase. Because of this we say that it is a secondary active transport. क्यों? क्योंकि सोडियम की मूवमेंट को ATPase रूल कर रहा है एंड उस ATP के सोडियम की मूवमेंट की वजह से ही ग्लूकोज अंदर आ पा रहा है. दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, secondary active transport, right. I guess I have a picture for this as well. Here it is. So the mechanism of glucose transport fueled by sodium gradient, right. कैसे सोडियम ग्रेडियंट की हेल्प से मूव कर रहा है. सोडियम का जो ग्रेडियंट है वो ऑपोजिट है, right. Sodium is moving from this, from high to low in this direction, right, using a carrier proteins, right. ये आपका सोडियम है, ये आपका मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स इनसाइड, सोडियम पॉजिटिव चार्ज एंड ग्लूकोज आल्सो इट्स मूविंग आउट, राइट. एंड ग्लूकोज इज मूविंग अगेंस्ट द concentration gradient, glucose concentration gradient is this way, from high here, low here, राइट. तो ये जब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम डील करेंगे मैं तब इसको डिटेल में अगेन फिर से समझाऊंगा, राइट. अभी सिर्फ ये है कि सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट के बारे में हम मेजरली डिस्कस कर रहे हैं एज एन एग्जांपल. तो ये कौन सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ अगेन which one, symport or antiport,
It's an example of symport because they are moving in both same direction, right? दोनों के दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, right? They are moving in the same direction, hence it's called as a symport. It's just a basic thing for the symport antiport के stuff के लिए मैंने बताई है, right? And जो last thing है, जो कि antiport का example जो मैंने बताया था आपको, that is transport of carbon dioxide, right? I'll just finish it off with this particular thing, right? So transport of carbon dioxide. Transport of carbon dioxide is characterized by band 3 proteins, right? जो आपके band 3 proteins हैं वो इस transport of CO2 को maintain करते हैं, right? And band 3 proteins का मैंने आपको already एक नाम पहले भी बताया था cell membrane के टाइम पे जब हम बात कर रहे थे, that is chloride bicarbonate exchanger. Chloride bicarbonate HCO3 minus exchanger. Chloride bicarbonate exchanger. तो what they do is, जो आपकी RBC है, राइट, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो अनायंस साथ में मूव करते हैं, राइट? सो दिस इज योर आरबीसी, राइट? ये आपकी आरबीसी है, राइट? ये उसकी मेम्ब्रेन है। आपकी आरबीसी के अंदर CO2 प्लस वाटर कन्वर्ट हो रहा है HCO3 माइनस एंड H प्लस में, राइट? सेल के अंदर, राइट? नाउ दिस HCO3 minus has to be transported out, so as a form of a carbon dioxide moving out of the RBCs, right? मूव करना है उनको, ट्रांसपोर्ट कराना है। तो ये जो CO2 है ये HCO3 माइनस की फॉर्म में मूव करेगा बाहर, एंड जो आपका क्लोरीन है वो सेल के अंदर आएगा। जो क्लोरीन है वो आपका सेल के अंदर आएगा टू मेंटेन दैट न्यूट्रलिटी, बिकॉज एक नेगेटिव चार्ज सेल के अंदर गया, सेल के बाहर गया, एंड एक नेगेटिव चार्ज सेल के अंदर, दैट इज क्लोरीन कम इनसाइड द सेल, वो सेल के अंदर है, राइट? तो द टोटल नेट चेंज जो चार्ज का चेंज हुआ है दैट इज जीरो, नेट चार्ज चेंज इज जीरो, hence we call this process also as electroneutral process. ये क्या प्रोसेस है? इलेक्ट्रो न्यूट्रल प्रोसेस है ये, right? The total net change of this particular thing, the charge change is electrically kind of neutral, you can say. Because of this it is a kind of electroneutral process. लेकिन अगर कोई gradient create होता उस process को हम कहते हैं electrogenic process, right? We call that process as electrogenic, जिसमें charge होता है। ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर चार्ज क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोजेनिक प्रोसेस। एंड सिंस इसके अंदर जो पर्टिकुलर केस है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट? मतलब पॉजिटिव अंदर, मतलब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होगा, राइट? एक आया एक गया, तो दैट इज कॉल्ड इट एज एन इलेक्ट्रो न्यूट्रल प्रोसेस, right? And this particular stuff you will be also studying in human physiology during the CO2 transport. And this particular case itself, this exact particular thing is also called chloride shift. क्लोराइड शिफ्ट, यस इट्स एब्सोल्युटली, चानू ने वही बोला, जो भी मैं बोलने वाला था उसने भी बोल दिया। क्लोराइड शिफ्ट इज दिस फिनोमिना ओनली, कि एक क्लोराइड जो है वो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इनसाइड आ जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। दिस अगेन फिनोमिना यू विल बी सीइंग अगेन, दिस पर्टिकुलर स्टफ बैंड 3 प्रोटीन्स नहीं आएगा, नाम नहीं बोलेंगे, या बट द ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो क्लोराइड शिफ्ट का स्टफ भी आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आदित्य सर से सीखोगे, राइट? So I'll end this class here. However, I have some one or two things in this particular segment only that I'll try to cover in the next class itself. Not a problem. So I guess it was quite easy for the today's class. कुछ ऐसा कुछ था नहीं खास आज, right? Just it was the discussion kind of stuff and some basic thing जो कि हमने carriers के बारे में बात की है, right? In the next class we'll be discussing about channel proteins, right? जिसके अंदर हम ion channels, अब इस आयन चैनल्स के अंदर भी हम बहुत सारे चैनल्स के बारे में बात करेंगे, वोल्टेज गेटेड, लाइगेंड गेटेड, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज। सो आयन चैनल्स के बाद हम पोरिन्स के बारे में बात करेंगे,
So we have kind of a good stuff to study in this particular segment, right? So I guess it's kind of clear to everyone for this particular stuff till now that we have discussed. एंड थोड़ा सा मेरे को इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है पीएच रिलेटेड कि कैसे अब सिंस हम देख रहे हैं कि बाइकार्बोनेट आयन मूव आउट कर रहा है आरबीसी से, राइट? सो इट कैन क्रिएट एन मतलब पीएच डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज एच प्लस आयन इज मूविंग आउट, राइट? वो बाहर जा रहा है, बाइकार्बोनेट इज मूविंग आउट, सो द पीएच इज काइंड ऑफ डिक्रीजिंग, राइट? तो हाउ द पीएच इज बीइंग रेगुलेटेड बिकॉज ऑफ दिस, वो हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, हालांकि ये सब कुछ आप वैसे भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, राइट? तो इस वही है कि एग्जाम्पल जो है वो सिर्फ किस चीज का दिया हुआ है, एंटीपोड का, कि भाई कार्बोनेट बाहर क्लोराइड अंदर, सो दैट इज एन एग्जाम्पल फॉर आपका एंटीपोड that we generally see in the thing, right? So I hope it's kind of clear. We'll just discuss everything after this in the next class, which is tomorrow, I guess, right? So thank you all so much. If you have any doubts, you're most welcome, or else we can end it. It's already time. Thank you so much. If you have any doubt, you are most welcome, or else we can end it. Thank you. Hit the like button, share, subscribe, blah blah blah. As always. Yeah. Thank you. Thank you, Chanu. Thank you. Okay, so I shall end the streaming or stuff. If no one is having any doubt, we'll just move forward in the next class tomorrow. And the next class scheduled at 7:30. We would be telling you just after some time because of certain problems, because the teacher concerned is found corona positive. So it's kind of a bad news as well. So let's see. Hope for the best. If she's well, she'll take the class, or else we'll arrange a kind of a class if possible. So let's see. Okay. Thank you all so much. So if you all have, we can end the class. Okay. Bye bye. Thank you, everyone.